We heartily our distinguished guests here on the stage and all others who are present in this auditorium. जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करूं, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। इन्हीं मजबूत इरादों के साथ आइए हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का स्वागत करते हैं। Plants symbolize life, growth, and sustainability, values that align beautifully with the vision of our event. As a token of our appreciation and respect, we would like to present planters to our esteemed guests and dignitaries. Let us begin by honoring Shri Vikramjit Singh Ji, Secretary, Department of Commerce and Industry, whose presence has added immense value to this occasion. I kindly request Madam Neha Jalali Ji, Director, Press Information Bureau, Jammu, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, to present a planter to Shri Vikramjit Singh Ji. I request my colleague to come forward with a planter here on the stage. मुअज़्ज़िज़ मेहमान का हम स्वागत करते हैं। Thank you, sir. Thank you all our esteemed guests for accepting this humble token of our respect. We must be doing certain things online. We are consuming something and we are creating something. And now it is the time where the content is not only in personal capacity, it's also in the professional capacity. And the second thing is the influencer spending. Since I am sharing some statistics with you, I would also share that the minimum average cost of a sponsored YouTube video is about 2 lakh rupees. And the same for an Instagram post is 1 lakh rupees. We might not even be aware of such things. We are scrolling the feed and certainly some advertisements or some other things might be popping up in our feeds. And we talk so much about AI, like this is the talk of the town. But at the heart of it, there is actually the human brain who has written the code for that. We generate things by AI, but certainly someone has written that code. Now, what do I mean by such examples? That there's background work going on. There is the creation of content and there is the technology involved. That is where the government of India's role comes in, which has been designed to propel India's media and entertainment M&E industry to even greater heights and amplify the nation's voice as a global powerhouse. The media and entertainment landscape is undergoing a seismic shift, driven by technological advancements, That reflects the importance changing of consumer different behaviors, in and the different rise of new categories of platforms. new and traditional. From the rise of streaming services to the emergence of immersive technologies like virtual and augmented reality, we are witnessing a revolution that is redefining the way we create, consume, and interact with content. But innovation is not just about adopting new technologies or trends, it is about fostering a culture of creativity, experimentation, and risk taking. It is about embracing disruption and using it as an opportunity to evolve and grow. India is positioned to become a prominent hub for high quality and cost effective content development. The country has a lot of talent, ranging from compelling actors and directors to competent technicians and animation professionals. It is in this backdrop, and with an objective to bring together global leaders from the M&E industry at a premier forum in India, as envisioned by Prime Minister Shri Narendra Modi, the World Audio, Visual and Entertainment Summit, WAVES,
is all set to begin on February the 5th at Bharat Mandapam in New Delhi. The 5-day landscape. The summit will convene industry leaders, stakeholders, and innovators to explore opportunities, tackle challenges, attract trade to India, and shape the sector's future. WAVES is supported by industry partners including the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry and the Confederation of Indian Industry. Over the past decade, the industry has undergone a significant transformation driven by technological advancements, changing consumer preferences, and evolving business models. The India M&E sector's growth outpaced many developed countries in the recent years. Consumption trends in India continue to favor digital media, social media, video audio streaming, and online gaming. Yet, traditional media like regional television, print, radio, out of home, and cinema also grew and were profitable. The current market cap of M&E in India stands approximately at 27.3 billion US dollars as of 2023. It is poised to grow to approximately 50 billion US dollars by 2029. To aid this growth, a lot of policy interventions have been done by the government of India as well. The future of Indian media and entertainment industry is quite bright, and it can become a major contributor to the GDP and also given a double digit compounded annual growth rate as per an EY report. The first one is digital advertising. It grew by 15% to reach INR of 576 billion, which is a total of 51% of the total advertising revenues. This includes all kind of advertising by SMEs, long tail advertisers, and advertising earned by e-commerce platforms. Online gaming is also a very important segment. The segment is constantly growing, and last year it grew at 22% to reach 220 billion Indian rupees. It overtook film entertainment to become the fourth largest segment in the M&E industry. There are over 450 million online gamers in India, of which 100 million grew by 20%. The growth was driven primarily by government events, personal events, weddings, and ticketed events, which included several international format events. The film industry also grew by 14% to reach an INR of 197 billion. The media and entertainment sector in J&K has also seen growth in the recent year. As we've seen, there are movies and television series being shot in J&K now. We have recently seen the Legends League, which happened both in Jammu and Srinagar, which was a great event. There are many live concerts also happening in the cities of Jammu and Srinagar. Jammu and Kashmir, being a tourist destination, is also an ideal destination for content creators. There are institutions of national guidance and education for students who are interested to enter into this sector. There is also the J&K Entrepreneur Development Institute here, which can support with incubation and access to finance for startups wanting to enter into the media and entertainment sector. So the first edition of the World Audiovisual Entertainment Summit Waves cannot be happening at a better time than this. India is ready to be the global hub of media and entertainment. The Wave Summit will position India as the global content hub and a net exporter of content. It will enhance Indian media's global market share, position India as a major investment hub for all the global players. It will help us foster strategic partnerships between global and India counterparts to expand market reach, co-produce content, and leverage each other's strength. Connect with a diverse range of industry leaders, policymakers, and innovators. I would conclude by saying that the future of the media and entertainment industry in India is bright, and events like WAVE will push India to become a global leader. I would like to thank Press Information Bureau of Jammu for making me a part of this event today. Thank you so much. Basically, Indian service industry or tertiary sector, which we call it, contributes more than 55% of the GDP. And if India has to become a developed country by 2047,
as is the vision of Honorable Prime Minister. This industry has significant role to play. And given the kind of its growth during the recent past, I'm sure that the contribution of this media and entertainment industry, India would achieve this target of becoming a developed economy by 2047. WAVE's World Audiovisual and Entertainment Summit. It has opportunities for our students, as rightly told by my previous speakers, that you can participate in different challenges as per your talent by uploading your content and participating in the competition. And those who will be successful in these competitions, they will be invited in the summit. See, this India is the 7th largest exporter of audiovisual services. And I'm sure in the coming days, with the focus of the government, it will improve further and become the reaches first 5 countries of the world. Now, as far as our university is concerned, I think Press Information Bureau is holding this first collaborative programs with the University of Jammu. And given the fact that we now have Center for Media, Journalism and Media Studies, our collaboration would be strengthened further in the near future. It's a privilege again to be here for spreading awareness related to this very, very major event. In fact, the first event of its kind that is being organized by the Ministry of Information and Broadcasting of Government of India. हमने एक बहुत ही डाइवर्स, एक बहुत ही वाइब्रेंट और एक बहुत ही अपकमिंग सेक्टर है. ये ऐसा सेक्टर है जिससे आप और हम किसी भी तरह से अलग अलग तरह से जुड़े हुए, कोई अलग नहीं है इस सेक्टर से, चाहे वो कोई लॉ का स्टूडेंट हो, हॉस्पिटैलिटी के स्टूडेंट्स हो जैसे कि आज हमारे यहाँ पीछे हैं, ऑफिसर्स हो, मीडिया हो या हमारे बाइकर्स हो, ऑल ऑफ अस आर क्रिएटिंग कंटेंट इन सम फॉर्म और द अदर. ये आज की हमारी नेसेसिटी भी है, हमारी जरूरत भी है, हमारी लग्जरी भी है, हमारा काम भी है. सो हर तरह से हम लोग कंटेंट किसी ना किसी तरह से बना रहे हैं. और ये जो कंटेंट हम बना रहे हैं ये कुछ हद तक ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि कई जगहों पर हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हम देखते हैं इंस्टाग्राम है या सोशल मीडिया है, ये ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट प्लेटफॉर्म्स हैं. लेकिन इसके अलावा बहुत सारा कंटेंट है जो हो सकता है शायद बहुत सारा डिजिटल फॉर्म में ना भी हो, वो अनऑर्गेनाइज्ड कंटेंट है. The catch here is to understand that every content that we are creating can be monetized. Every content that you and I are creating. In fact, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कंटेंट बना रहे हैं. तो ये हर तरह का कंटेंट जो क्रिएट हो रहा है ये मोनेटाइज किया जा सकता है, और जब ये मोनेटाइज किया जाएगा किसी ना किसी तरह से आपको और देश की इकोनॉमी को हेल्प करेगा. सो हाउ डू वी मेक दिस होल कंटेंट क्रिएशन की जो ये पूरी इंडस्ट्री है, आई वुड से इट इज पार्शियली ऑर्गेनाइज्ड एंड पार्शियली अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, इसको किस तरह से हम लोग जो ओवरऑल हमारी देश की इकोनॉमी है, इनफैक्ट एक ग्लोबल इकोनॉमी है, उसका कैसे भाग बना सकें. The WAVE Summit is all about that. So what I'm trying to say is, जब हम बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स आए हैं उन्होंने बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स दिए, बहुत सारे फिगर्स दिए हमें, मैं भी शायद 2-4 बता दूंगी. But what do these figures and what do these statistics exactly mean? Sector cannot do, an organized sector can do both, benefiting the people, you know, the citizens of our country, as well as the economy of the world, as well as of India. And how are we doing this? We are trying, the Ministry of Information and Broadcasting is promoting, you know, young talent, is promoting content creation. ये जो 27 challenges जिसके बारे में जाकिर जी ने भी आपको भी बताया है, बड़े विस्तार से बताया, a lot of detail he told you about so many challenges across sectors, you know, whether it's film, whether it's music, whether it's live events, whether it is broadcasting, whether it's AR, VR. हमारे पास शायद टेक्नोलॉजी का उतना ज्यादा ज्ञान ना हो, बहुत सारे लोगों के पास होगा भी, बट बहुत सारे लोगों के पास शायद टेक्नोलॉजी का उतना ज्ञान नहीं है. लेकिन इसमें सिर्फ हाई-फाई टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स की बात नहीं हो रही है, वीएफएक्स की बात नहीं हो रही है. इसमें बेसिक सोशल मीडिया के ऊपर जो आप लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसकी भी बात हो रही है. वी गॉट सम वेरी गुड फिगर्स फ्रॉम मुजफ्फर रिगार्डिंग यू नो द यूट्यूब से जैसे आप कितना कमा रहे हैं, कितना कमा सकते हैं आज. शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है.
तो जो ये क्रिएट इन इंडिया चैलेंज जो मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी क्रिएट कर रही है, दिस इज द सीजन 1 दैट इज प्रेजेंटली बीइंग गोइंग ऑन। ये अगस्त से शुरू हुआ था पिछले इसी साल 2024 में, एंड इसके बहुत सारे आगे भी सीजन्स होंगे। द ग्रैंड फिनाले इज गोइंग टू बी हेल्ड एज अ पार्ट ऑफ द वेव्स। सो सारे ऑल ओवर इंडिया से आई वुड प्रमोट, आई वुड encourage you all also to check out the website. The details have already been shared with you. और आप देखें आप किस तरह से इसका एक हिस्सा बन सकते हैं। जो इसकी डिफरेंट स्टेजेस होंगे, उन स्टेजेस को जब आप क्रॉस करेंगे, आपका फिर पूरा का पूरा जो ट्रिप होगा टू फॉर दिस पार्टिसिपेटिंग इन द वेव्स, इफ यू आर इवेंचुअली द फाइनलिस्ट इन ऑल ऑफ दीज कैटेगरीज, तो वो ट्रिप पूरा का पूरा स्पॉन्सर्ड होगा। और उसमें आपको हो सकता है यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपको मेंटरिंग एज अ पार्ट ऑफ द वेव समिट मिलेगा, आपको अपने आइडियाज पिचिंग करने का मिल सकता है। इफ यू लकी इनफ यू माइट इवन गेट फंडिंग, सो ये तमाम जो चीजें हैं वहां पर इनफैक्ट एक वेव्स बाजार, वेव्स एक्सेलेरेटर करके ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट, a tectonic shift in how the industry has played out. And the dominant theme has been one of democratization. Till about 20 years back, if one wanted to make a movie, there was a huge impediment in terms of access to technology. It was very difficult to get the movie camera, and then one had to deal with finding the venue for it, finding the actors for it, and then the post-production work was also equally expensive. That is why people often went to institutes like IIMC and for Indian Institute of Mass Communication and the Jammu, the Mass Communication Research Center, largely because you did not have access to the software and the hardware that was required. Now, what has happened in the last is that not only has access to hardware become democratized, all of you have a video camera in your phone today. So that has changed. At the same time, with the growth of the software industry, and particularly AR, VR technologies, which have become far, far cheaper and easily accessible, you do not need great locations and great actors to convey your thoughts through a visual format. So the need for the location, so it all depends on your imagination and the amount of skill and expertise you have to be able to bring to bear on what you want to present. So I think in that respect, the Waves Summit, I think, is very opportune, given the large size of and the large population of India and the language, the dominant regional languages. I think India presents many markets in many different languages, which the West cannot compete with at present. Each of the regions, for example, even Dogri as a language here, would compete with many European languages in terms of the number of people and the amount that the people are willing to spend to see content in that language. So, for all those practitioners of this industry, or all those students who are keen to make a mark in this industry, I think this is a great event, and all of you must, if you wish to make a career in this industry, grab this opportunity and take advantage of it. Because in the years to come, and countries like India, where our per capita spent on entertainment is far greater than other countries. Fantastic. Sir, kindly accepted. Thank you so much. Now I invite on stage Shri Vivek Pathak ji, Head of News Unit, Doordarshan Kendra Jammu and Additional Director,
IIMC. My request to Shri Muzaffar Wali ji, Media and Communication Officer, Associated Chamber of Commerce and Industry. Sir. Thank you, sir. सर थोड़ा आगे थोड़ा ग्लोबल समिट कर रही है विच इज़ कॉल्ड एज वेव्स, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, जो दिल्ली में होएगी। ये फरवरी के महीने में 2025 में होएगी। और इस समिट के तहत अलग अलग कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के, वो इसमें भाग लेंगे। साथ ही इंडिया के पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स, जो इंडस्ट्रियल बॉडीज़ हैं, फिकी, एसोचैम एक्सेट्रा, और साथ ही जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूथ है, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इन सब लोगों का इसमें भागीदारी रहेगी। इसके तहत एक क्रिएट इन इंडिया चैलेंज क्रिएट किया गया था, और इस चैलेंज में बहुत सारे जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव जी ने ये अगस्त 2024 में लॉन्च किया था। इस क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत अलग अलग कैटेगरीज जैसे फिल्म्स, AR VR, एनिमेशन, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स और न्यूज़ और ये सब ट्रेडिशनल मीडिया तो है ही है, इन अलग अलग कैटेगरीज में कंपटीशन स्टार्ट किए गए हैं। जो पहला सीज़न था, इसमें जो जीतेंगे वो नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, और इवेंचुअली जो वेव्स की जो ये समिट होएगी उसमें चांस मिलेगा जो इनके विनर्स रहेंगे, ताकि वो पिच कर सकें, उनको कोलैबोरेशंस का मौका मिल सकता है इंडस्ट्री बाकी कंट्रीज़ और इंडिया के जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ भी। तो ये एक बहुत ही वाइब्रेंट अपॉर्चुनिटी है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के, वो एक साथ आएंगे पहली बार, ना सिर्फ भारत देश के पर बाकी कंट्रीज़ के भी। और जो इसके पीछे आइडिया है वो यही है कि जो कंटेंट क्रिएशन है, इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर हो कंटेंट क्रिएशन में, और एक कंटेंट क्रिएशन हब की तरह इंडिया को हम लोग प्रोजेक्ट कर सकें ग्लोबल स्टेज पर। और हम देखेंगे कि जैसे कि एनिमेशन हो या गेमिंग सेक्टर हो, इसमें ऑलरेडी इंडिया इज़ डूइंग वेरी वेल, क्योंकि पिछले कुछ सालों में काफ़ी अवेयरनेस की गई है, बहुत सारे पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं इन फील्ड्स में। इसी तरह से बाकी के जैसे ई स्पोर्ट्स वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। सो इन सभी सेक्टर्स को साथ में ला करके, ताकि मोनेटाइज किया जा सके और टैलेंट को, जो यंग टैलेंट है, उनको प्रमोट किया जा सके मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर में, यही इसके पीछे मैसेज है। देखिए जी, ये रैली जो है ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जम्मू करवा रहा है। इसके साथ साथ शक्ति उद्घोष फाउंडेशन और रॉयल राइडर्स एडवेंचर क्लब के बाइकर जो हैं, कुछ बच्चियां और कुछ लड़के जो हैं हमारे साथ राइड करने वाले हैं। ये राइड जो है वेव समिट को प्रमोट कर रही है। वेव्स मींस वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। पूरे भारत में, पूरे विश्व भर में आज जिस चीज का बोलबाला है वो गैजेट आपने हाथ में पकड़ा हुआ है। किसी भी तरह का जो हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो, शॉर्ट हो, कोई भी क्लिपिंग जो होती है, उसका पर्पस क्या है, किस मायने से हम सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, और उसका डाइवर्सिटी जो है उसमें, कि एक वीडियो से या एक फोटो डालने से उसको मोनेटाइज कैसे किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो आजकल कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट के मायने क्या है, कंटेंट क्यों क्रिएट किया जा रहा है, कंटेंट कैसे क्रिएट करना होता है, और कंटेंट को अगर मोनेटाइज करना है तो इन सारी चीजों को अगर जोड़ दिया जाए तो इन सब चीजों को वेव्स के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है। और वेव्स जो है भारत में अपने आप में पहला एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इसमें है ही है, और इसके साथ साथ जितनी भी इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और हम बाइकर्स अपनी बाइक रैली के थ्रू वेव्स को प्रमोट कर रहे हैं। उनका जो मैसेज है वो सोसाइटी में प्रोपोगेट कर रहे हैं। हर व्यक्ति पूरे दिन में 8-10 घंटे फोन चलाता है, रील स्क्रॉल करता है। तो जब हम स्क्रॉल करते हैं, वो जो जानकारी है, कोई वीडियो देख रहे हैं तो वो कितने सेकंड्स के लिए हमने वीडियो देखी, क्या कंटेंट था, वो कंटेंट मोनेटाइज हो रहा है, मैं भी कर सकती हूँ क्या, तो मैं क्या उस चीज का हिस्सा बन सकती हूँ, मैं अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकती हूँ क्या। तो इन सारी चीजों की जो कुल मिला के जानकारी है, जो सामान्य व्यक्ति को कम होती है, जो लोग आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव तो होते हैं पर उनको पता नहीं होता, वेव्स प्रमोट करने का काम करेगी और उन सब चीजों की जानकारी देगी।